श्रीजगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणं पंचमः स्कन्धः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः। देवी महात्म्य के प्रसंग में राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा। जन्मेजय उवाच। महिमा वर्णिता सम्यक् चण्डिकायास्त्वया मुने, केन चाराधिता पूर्वं चरित्रत्रयोगतः। प्रसन्ना कस्य वरदा केन प्राप्तं फलं महत्, आराध्य कामदां देवीं कथयस्व कृपानिधे। उपासना विधिं ब्रह्म तथा पूजा विधिं वद, विस्तरेण महाभाग होमस्य च विधिं पुनः। सूत उवाच। इति भूपवचा श्रुत्वा प्रीता सत्यवती सुतः, प्रत्युवाच नृपं कृष्णो महामाया प्रपूजनम्। व्यास उवाच। स्वारोचसेन्तरे पूर्वं सुरथो नाम पार्थिवः, बभूव परमोदारा प्रजापालन तत्परः। सत्यवादी कर्मपरो ब्राह्मणानां च पूजकः, गुरुभक्तिरतो नित्यं सुधारगमने रतः। दानशीलो विरोधी च धनुर्वेदैकपारगः, एवं पालयतो राज्यं म्लेच्छा पर्वतवासिनः। बलात् शत्रुत्वमापन्ना सैन्यं कृत्वा चतुर्विधम्, हस्त्यस्वरथपादाते सहितास्ते मदोत्कटा। कोला विध्वंसिना प्राप्ता पृथ्वी ग्रहण तत्परा। सुरथा सैन्यमादाय सम्मुखा समुपद्यत, युद्धं समभवद्घोरं तस्य तैरतिदारुणै। म्लेच्छानां तु बलं स्वल्पं राज्ञस्तद्बलमद्भुतम्, तथापि तैर्जितो युद्धे दैवाद्राजा पराजितः। भग्नश्च स्वपुरं प्राप्ता सुरक्षं दुर्गमण्डितं, चिन्तयामास मेधावी राजा नीतिविचक्षणः। प्रधानान् विमना दृष्ट्वा शत्रुपक्षसमाश्रितान्, स्थानं गृहीत्वा विपुलं परिखा दुर्गमण्डितं। कालप्रतीक्षा कर्तव्या किं वा युद्धं वरं मतं, मन्त्रिणा शत्रुवशगा मन्त्रयोग्या न ते किल। किं करोमीति मनसा भूपति समचिन्तयत्, कदाचित्ते गृहीत्वा मां पापाचारा पराश्रिता शत्रुभ्योऽथ प्रदास्यन्ति तदा किं वा भविष्यति। पापबुद्धिषु विश्वासो न कर्तव्या कदाचन, किन्न ते वै प्रकुर्वन्ति ये लोभवशगा नरा। भ्रातरं पितरं मित्रं श्रोदं बान्धवं तथा, गुरुं पूज्यं द्विजं द्वेष्टि लोभाभीष्टा सदा नरः। तस्मान्मया न कर्तव्यो विश्वासा सर्वथाधुना, मन्त्रिवर्गेति पापिष्टे शत्रुपक्षसमाश्रिते। इति संचिन्त्य मनसा राजा परमदुर्मना, एकाकी है मारुह्य निर्जगाम पुरात्ततः। असहायोऽथ निर्गत्य गहनं वनमाश्रितः, चिन्तयामास मेधावी क्व गन्तव्यं मया पुनः। योजनत्रयमात्रे तु मुनेराश्रममुत्तमम्, ज्ञात्वा जगाम भूपालस्तापसस्य सुमेधसः। बहुवृक्षसमायुक्तं नदीपुलनसंसृतं, निर्वैरस्वापदाकीर्णं कोकिलारावमण्डितं। शिष्याध्ययनशब्दाढ्यं मृगयूथशतावृतं, नीवारान्नसुपक्वाढ्यं सुपुष्पफलपादपं। होमधूमसुगन्धेन प्रीतिदं प्राणिनां सदा, वेदध्वनिसमाक्रान्तं स्वर्गादपि मनोहरं। दृष्ट्वा तमाश्रमं राजा बभूव सौमुदान्वितः, भयं त्यक्त्वा मतिं चक्रे विश्रामाय द्विजाश्रमे। आसज्य पादपे स्वं तु जगाम विनयान्वितः, दृष्ट्वा तं मुनिमासीनं सालच्छायासु संसृतं। मृगाजिनासनं शान्तं तपसातिकृशं ऋजुम्, अध्यापयन्तं शिष्याश्च वेदशास्त्रार्थदर्शिनं। रहितं क्रोधलोभाद्यैर्द्वन्द्वातीतं विमत्सरम्, आत्मज्ञानरतं सत्यवादिनं समसंयुतं। तं वीक्ष्य भूपतिर्भूमौ पपात दण्डवत्तदा, तदग्रे श्रुजलापूर्णा नयना प्रेम संयुतः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तमुवाच तदा मुनिः, शिष्यो ददौ वृषिं तस्मै गुरुणा नोदितस्तदा। उत्थाय नृपतिस्तस्यां समासीनस्तदाज्ञया, अर्धपाद्यार्हणं चक्रे सुमेधा विधिपूर्वकं। पप्रच्छात्र कुता प्राप्ता कस्त्वं चिन्तापरा कथं, कथयस्व यथा कामं संवृतं कारणं तुह्य। किमागमनकृत्यं ते ब्रूहि कार्यं मनोगतं,
करिष्ये वाञ्छितं काममसाध्यमपि यत्तव। राजोवाच सुरथो नाम राजाहं शत्रुभिश्च पराजितः त्यक्त्वा राज्यं गृहं भार्यामहं ते शरणं गतः। यदा ज्ञापयसे ब्रह्म तदहं भक्तितत्परः करिष्यामि न मे त्राता त्वदन्या पृथिवीतले। शत्रुभ्यो मे भयं घोरं प्राप्तोऽस्म्यद्यतवान्तिकं त्रायस्व मुनिशार्दूल शरणागतवत्सल। ऋषिरुवाच निर्भयं वस राजेन्द्र नात्र ते शत्रवः किल आगमिष्यन्ति बलिनो निश्चयं तपसो बलात् नात्र हिंसा प्रकर्तव्या वनभृत्या नृपोत्तम कर्तव्यं जीवनं शस्त्रनिवार फलमूलकै। व्यास उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा निर्भया स नृपस्तदा उवासाश्रम एवासौ फलमूलासना शुचिः। कदाचित् स नृपस्तत्र वृक्षच्छायां समाश्रितः चिन्तयामास चिन्तार्तो गृह एव गताशयः राज्यं मे शत्रुभिः प्राप्तं लेक्षैः पापरतैः सदा सम्पीडितास्युर्लोकास्तैर्दुराचारैर्गतत्रपैः। गजाश्च तुरगा सर्वे दुर्बला भक्ष्यवर्जिता जाता शरुनात्र संदेहा शत्रुना परिपीडिता सेवका मम सर्वे ते शत्रूणां वशवर्तिनः दुःखिता एव जातास्यौ पालिता ये मया पुरा धनं मे सुदुराचारैः सद्भय परैः दूता सवभुजिष्यादिस्थाने स्यात् प्रापितं किल कोशक्षयं करिष्यन्ति व्यसनैः पापबुद्धया न पात्रदाननिपुणां म्लेच्छास्ते मन्त्रिणोऽपि मे इति चिन्तापरो राजा वृक्षमूलस्थितो यदा तदा जगाम वैश्यस्तो काश्चित् आर्तिपरस्तथा नृपेण पुरतो दृष्टा पार्श्वे तत्रोपवेशितः पप्रच्छ तं नृपा कोशे कुत एवागतो वनं कोशि कस्माच्च दीनोऽसि हरिणा शोकपीडितः ब्रूहि सत्यं महाभाग मैत्री साप्तपदी मता। व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राज्ञस्तमुवाच विशोत्तमः उपविश्य स्थिरो भूत्वा मत्वा साधु समागमं। वैश्य उवाच मित्राहं वैश्यजातीया समाधिर्नाम विस्तृतः धनवान् धर्मनिपुणा सत्यवागनसूयकः पुत्रदारैर्निरस्तोऽहं धनुलुब्धैरसाधुभिः कृपणेतिम संकृत्वा त्यक्त्वा मायां सुदुस्त्यजां स्वजनेन च संत्यक्ता प्राप्तोऽस्मि वनवासु वै कोचित् त्वं भाग्यवान् भाषे कथयस्व प्रियाधुना। राजोवाच सुरथो नाम राजाहं दस्युभूपीडितो भवं प्राप्तोऽस्मि गतराज्योऽत्र मन्त्रिभिः परिवञ्चितः दृष्ट्या तुमत्र मित्रं मे मिलितोऽस्मि विशोत्तम सुखेन विहरिष्यावो वनेऽत्र सुपादपे शोकं त्यज महाबुद्धे स्वस्थो भव विशोत्तम अत्रैव च यथा कामं सुखं तिष्ठ मया सह। वैश्य उवाच कुटुम्बं मे निरालम्बं मया हीनं सुदुःखितं भविष्यति च चिन्तार्तं व्याधिशोकोपतापितं भार्यादेहे सुखं नो वा पुत्रदेहे न वा सुखम् इति चिन्तातुरं चेतो न मे साम्यति भूमिप कदा दृक्षेषु तं भार्यां गृहं स्वजनमेव च स्वस्थं न मन्मनो राजन् गृहे चिन्ताकुलं भृशं। राजोवाच यैर्निरस्तोऽसि पुत्राद्यैरसद्भृत्यैषु बालिशैः तान् दृष्ट्वा किं सुखं तेद्य भविष्यति महामते हितकारी वरा शत्रुर्दुःखदा सुहृदा सुकुतः तस्मात् स्थिरं मना कृत्वा विहरस्व मया सह। वैश्य उवाच मनो मे न स्थिरं राजन् भवत्यद्य सुदुःखितं चिन्तयात्र कुटुम्बस्य दुस्त्यजस्य दुरात्मभिः। राजोवाच ममापि राज्यजं दुःखं दुनोति किल मानसं पृच्छाबोध्य मुनिं शान्तं शोकनाशनमौषधम्। व्यास उवाच इति कृत्वा मतिं तौ तु राजा वैश्यश्च जग्मतुः मुनिं तौ विनयोपेतौ प्रष्टुं शोकस्य कारणं गत्वा तं प्रणिपत्याह राजा ऋषिमनुत्तमम् आसीनं सम्यगासीना शान्तं शान्तिमुपागतः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां पंचमस्कन्धे सुरथराज समाधि वैश्योर्मुनिसमीपे गमनं नाम 32। अथ 33 मुनि सुमेधा का सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताना। राजोवाच मुनिवैश्योऽयमधुना वने मे मित्रतां गतः पुत्रदारैर्निरस्तोऽयं प्राप्तोऽत्र मम संगमं कुटुम्बविहरेणासौ दुःखितोऽतीव दुर्मनाः
न शान्तिमुपयात्ते स तथापि मम साम्प्रतं गतराज्यस्य दुःखेन चोक्कार्तोऽस्मि महामते निष्कारणञ्च मे चिन्ता हृदयान्न निवर्तते हया मे दुर्बला स्युः किं गजाः शत्रुवशं गता भृत्यवर्गस्तथा दुःखे जाता स्यात् मया विना कोशक्षयं करिष्यन्ति रिपुभूतिबलाक्षणात् इत्येवं चिन्तयान्नस्य न मे निद्रातनौ सुखं जानामीदं जगन्मिथ्या स्वप्नवत् सर्वमेव हि जानतोऽपि मनोभ्रान्तं न स्थिरं भवति प्रभो कोऽहं केष्वागजा केमि न ते मे च सहोदरा न पुत्रा न च मित्राणि येषां दुःखं दुनोति मां भ्रमोऽयमिति जानामि तथापि मम मानसः मोहो नैवापसरति किं तत्कारणमद्भुतं स्वामिस्त्वमसि सर्वज्ञा सर्वसंशयनाशकृत् कारणं ब्रूहि मोहस्य ममास्य च दयानिधे व्यास उवाच इति पृष्टस्तदा राज्ञा सुमेधा मुनिसत्तमा तमुवाच परं ज्ञानं शोकमोहविनाशनम् ऋषिर्वाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कारणं बन्धमोक्षयो महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनामिह ब्रह्मा विष्णुस्तथेशानस्तुरासाड्वरुणो नीलः सर्वे देवा मनुष्याश्च गन्धर्वो रगराक्षसा वृक्षाश्च विविधा बल्या पशवो मृगपक्षिणः मायाधीनाश्च ते सर्वे भाजनं बन्धमोक्षयो तया सृष्टमिदं सर्वं जगत्स्थावरजङ्गमं तद्वशे वर्तते नूनं मोहजालेन यन्त्रितं त्वं कियान्मानुषेष्वेका क्षत्रियो रजसा विलः ज्ञानिनामपि चेतांसि मोहयत्यनिशं हि सा ब्रह्मेशवासुदेवाद्या ज्ञाने सत्यविशेषतः तेऽपि राघवसाल्लोके भ्रमन्ति परिमोहिता पुरा सत्ययुगे राजन् विष्णुनारायणा स्वयं श्वेतदीपं समासाद्य चकार विपुलं तपः वर्षाणामयुतं यावत् ब्रह्म विद्याप्रसक्तये अनस्वरसुखायासौ चिन्तयानस्तथा परम् एकस्मिन् निर्जने देशे ब्रह्मापि परमाद्भुते स्थितस्तपसि राजेन्द्र मोहस्य विनिवृत्तये कदाचिद्वासुदेवोऽसौ स्थलान्तरमतिर्हरिः तस्मात् देशात् समुत्थाय जगामान्यदृदृक्षया चतुर्मुखोऽपि राजेन्द्र तथैव निःसृतास्थलात् मिलितौ मार्गमध्ये तु चतुर्मुखचतुर्भुजौ अन्योन्यं पृष्टवन्तौ तौ कस्तं कस्त्वमिति स्मः ब्रह्मा प्रोवाच तं देवं कर्ताहं जगता किल विष्णुस्तमाह भो मूर्ख जगत्कर्ताहमच्युतः त्वं कियान् बलहीनोऽसि रजोगुणसमाश्रितः सत्त्वाश्रितं हि मां विद्धि वासुदेवं सनातनं मया त्वं रक्षितोऽद्यैव कृत्वा युद्धं सुदारुणं शरणं मे समायातो दानवाभ्यां प्रपीडितः मया तौ निहतौ कामं दानवौ मधुकैटभौ कथं गर्भायसे मन्दा मोहोऽयं त्यजुस्साम्प्रतं न मत्तोऽप्यधिका कश्चित् संसारेऽस्मिन् प्रसारिते ऋषिर्वाच एवं प्रवदमानौ तो ब्रह्म विष्णु परस्परं स्फुरदोष्टौ वेपमानौ लोहिताक्षौ बभूवतो प्रादुर्बभूव सहसा तयोर्विवदमानयो मध्ये लिङ्गं सुधाश्वेतं विपुलं दीर्घमद्भुतम् आकाशे तरसा तत्र वागुवाचा शरीरिणी तौ सम्बोध्य महाभागौ विवन्दन्तौ परस्परं ब्रह्मन् विष्णु विवादं मा कुरुतां वां परस्परं लिङ्गस्यास्य परं पारमधस्ताद् उपरि ध्रुवं यो याति विवुर्मध्ये स श्रेष्ठो वां सदैव हि एका प्रयातु पातालमाकाशमपरोधुना प्रमाणं मे वचाकार्यं त्यक्त्वा वादं निरर्थकं मध्यस्था सर्वदा कार्यो विवादेऽस्मिन् द्वयोरिह ऋषिर्वाच तच्छ्रुत्वा वचनं दिव्यं सज्जीभूतौ कृतोद्यमौ जग्मतुर्मातुमग्रस्तं लिङ्गमद्भुतदर्शनं पातालमगवद्विष्णु ब्रह्माप्याकाशमेव च परिमातुं महालिङ्गं स्वमहत्त्वविवृद्धये विष्णुर्गत्वा कियद्देशं श्रान्ता सर्वात्मना यतः न प्रापान्तं स लिङ्गस्य परिभृत्य ययौ स्थलं ब्रह्मा गच्छत्ततश्चोर्ध्वं पतितं केतकीदलं शिवस्य मस्तकात् प्राप्य परावृत्तो मुदावृतः आगत्य तरसा ब्रह्मा विष्णवे केतकीदलं दर्शयित्वा च वितथमुवाच मदमोहितः लिङ्गस्य मस्तकादेतद्गृहीतं केतकीदलम् अभिज्ञानाय चानीतं तव चित्तप्रशान्तये
श्रुत्वा तद्ब्रह्मणो वाक्यं दृष्ट्वा च केतकीदलं हरिस्तं प्रत्युवाचेदं साक्षी क कथयाधुना यथार्थवादी मेधावी सदाचारः शुचिस्समः साक्षी भवति सर्वत्र विवादे समुपस्थिते ब्रह्मोवाच दूरदेशात् समायाते साक्षी का समयेऽधुना यत्सत्यं तद्वचासेयं केतकी कथयिष्यति इत्युक्ता प्रेरिता तत्र ब्रह्मणा केतकी स्फुटं वचनं प्राह तरसा चार्गिणं प्रत्यबोधयत् शिवमूर्धने स्थितां ब्रह्मा गृहीत्वा मां समागतः सन्देहोऽत्र न कर्तव्यस्त्वया विष्णु कदाचन मम वाक्यं प्रमाणं हि ब्रह्मा पारङ्गतोऽस्यः गृहीत्वा मां समायाता शिवभक्तैः समर्पितां केतक्या वचनं श्रुत्वा हरिराह स्मयन्निव महादेवा प्रमाणं मे यद्यसौ वचनं वदेत् ऋषिर्वाच तदा कर्णहरिर्वाक्यं महादेवा सनातन कुपिता केतकीं प्राह मिथ्यावादिनी मा वद गच्छतो मध्यता प्राप्ता पतिता मस्तकान् मम मिथ्या विभाषिणी त्यक्ता मया तं सर्वदैव हि ब्रह्मा लज्जापरो भूत्वा ननाम मधुसूदनं शिवेन केतकी त्यक्ता तद्दिनात् कुसुमेषु वै एवं मायाबलं विद्धि ज्ञानिनामपि मोहदम् अन्येषां प्राणिनां राजन् का वार्ता विभ्रमं प्रति देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वदैव रमापतिः दैत्यान् वञ्चयते चासु त्यक्त्वा पापभयं हरिः अवतारः करो देवो नानायो निस्माधव त्यक्त्वानन्दसुखं दैत्यैर्युद्धं चैवाकरोद्विभो नूनं मायाबलं चैतन्माधवेऽपि जगद्गुरौ सर्वज्ञे देवकार्यांसे का वार्तान्यस्य भूपते ज्ञानिनामपि चैतांसि परमा प्रकृतिः किल बलादाकृष्य मोहाय प्रेक्षति महीपते यया व्याप्तमिदं सर्वं भगवत्या चराचरं मोहदा ज्ञानदासैव बन्धमोक्षप्रदा सदा राजोवाच भगवन् ब्रूहि मे तस्या स्वरूपं बलमुत्तमम् उत्पत्तिकारणं वापि स्थानं परमकं च यत् ऋषिर्वाच न चोत्पत्तिरनादित्वान् नृपा तस्या कदाचन नित्यैव सा परा देवी कारणानां च कारणं वर्तते सर्वभूतेषु शक्ति सर्वात्मना नृप सवक्षक्तिहीनस्तु प्राणी भवति सर्वथा शिक्षक्ते सर्वभूतेषु रूपं तस्यास्तदेव हि आविर्भावतिरुभावौ देवानां कार्यसिद्धये यदा स्तुवन्ति तां देवा मनुजाश्च विशाम्पते प्रादुर्भवति भूतानां दुःखनाशाय चाम्बिका नानारूपधरा देवी नानाशक्तिसमन्विता आविर्भवति कार्यार्थं स्वेच्छया परमेश्वरी दैवाधीना सा देवी यथा सर्वेश्वरा नृप न कालवसगा नित्यं पुरुषार्थप्रवर्तिनी अकर्ता पुरुषो दृष्टा दृश्यं सर्वमिदं जगत् दृश्यस्य जननी सैव देवी सदात्मिका पुरुषं रञ्जयत्येका कृत्वा ब्रह्माण्डनाटकं रञ्जिते पुरुषे सर्वं संहरत्यतिरङ्घसा तया निमित्तभूतास्ते ब्रह्म विष्णु महेश्वराः कल्पिता स्वस्वकार्येषु प्रेरिता लीलया त्वमे स्वांसं ते समारोप्य कृतास्ते बलवत्तरा दत्ताश्च शक्तयस्तेभ्यो गीर्लक्ष्मीर्गिरिजा तथा ते तां ध्यायन्ति देवेशा पूजयन्ति परां मुदा ज्ञात्वा सर्वेश्वरीं शक्तिं सृष्टिस्थितिविनाशिनीम् एतत्ते सर्वमाख्यातं देवी माहात्म्यमुत्तमं मम बुद्ध्यनुसारेण नान्तं जानामि भूपते। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रं संहितां पंचमस्कन्धे देवी महात्म्यं नाम त्रयस्त्रिंशः अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। मुनिसुमेधा द्वारा देवी की पूजा विधि का वर्णन। राजोवाच भगवन् ब्रूहि मे सम्यक् तस्या आराधने विधिं पूजा विधिं च मंत्राश्च तथा होम विधिं वद। ऋषिर्वाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि तस्या पूजा विधिं शुभं कामदं मोक्षदं नृणां ज्ञानदं दुःखनाशनम् आदौ स्नान विधिं कृत्वा शुचि शुक्लांबरो नरः आचम्य प्रयता कृत्वा शुभमायतनं निजं ततो वल्लिप्तभूम्यां तु संस्थाप्यासनमुत्तमं तत्रोपविश्य विधिवत्र्याचम्य मुदान्वितः पूजाद्रव्यं सुसंस्थाप्य यथाशक्त्यनुसारतः प्राणायामं तथा कृत्वा भूतशुद्धिं विधाय च कुर्यात् प्राणप्रतिष्ठां तु संभारं प्रोक्ष्य मन्त्रतः कालज्ञानं तथा कृत्वा न्यासं कुर्याद् यथाविधि शुभे ताम्रमये पात्रे चन्दनेन सितेन च षट्कोणं विलिखेद्यन्त्रं चाष्टकोणं ततो बहिः नवाक्षरस्य मन्त्रस्य बीजानि विलिखेत्ततः कृत्वा यन्त्रप्रतिष्ठां च वेदोक्तां संविधाय च अर्चां वा धातवीं कुर्यात् पूजां मन्त्रैः शिवोदितैः पूजनं पृथ्वीपाल भगवत्या प्रयत्नतः कृत्वा वा विधिवत् पूजां
मागमोक्तां समाहिता जपेन्न वाक्क्षरं मन्त्रं सत्तं ध्यानपूर्वकं होमं दशांशता कुर्यात् दशांशेन च तर्पणं भोजनं ब्राह्मणानां च तद्दशांशेन कारयेत् चरित्रत्रय पाठं च नित्यं कुर्यात् विसर्जयेत् नवरात्रव्रतं चैव विधेयं विधिपूर्वकम् आश्विने च तथा चैत्रे शुक्ले पक्षे नराधिप नवरात्रोपवासो वै कर्तव्यासुमिक्षता होमासु विपुलाकार्यो जप्यमन्त्रैषु पायसै शर्कराघृतमिश्रैश्च मधुयुक्तैषु संस्कृतै छागमांसेन वा कार्यो बिल्वपत्रैस्तथा शुभै हयारिकुसुमैरक्तैस्तिलैर्वा शर्करायुतै अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च विशेषतः कर्तव्यं पूजनं देव्या ब्राह्मणानां च भोजनं निर्धनो धनमाप्नोति रोगी रोगात् प्रमुच्यते अपुत्रो लभते पुत्रान् शुभाश्च वशवर्तिनः राज्यभ्रष्टो नृपो राज्यं प्राप्नोति सार्वभौमिकं शत्रुविपीडितो हन्ति रिपुं मायाप्रसादतः विद्यार्थी पूजनं यस्तु करोति नियतेन्द्रियः अनवद्यां शुभां विद्यां विन्दते नात्र संशयः ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा भक्तिसंयुता पूजे जगतां धात्रीं च सर्वसुखभाग् भवेत् नवरात्रव्रतं कुर्यान् नर नारी गणश्च यः वाञ्छितं फलमाप्नोति सर्वदा भक्तितत्परः आश्विने शुक्लपक्षे तु नवरात्रव्रतं शुभं करोति भावसंयुक्ता सर्वान् कामान् अवाप्नुयात् विधिवन्मण्डलं कृत्वा पूजास्थानं प्रकल्पयेत् कलशं स्थापयेत् तत्र वेदमन्त्रविधानतः यन्त्रं सुरुचिरं कृत्वा स्थापयेत् कलशोपरि वापयित्वा यवाश्चारून् पार्श्वता परिवर्तितान् कृत्वोपरिद्वितानञ्च पुष्पमाला समावृतं धूपदीपसंयुक्तं कर्तव्यं चण्डिकाग्रहं त्रिकालं तत्र कर्तव्या पूजा शक्त्यनुसारतः वित्तसाठ्यं न कर्तव्यं चण्डिकायाश्च पूजने धूपदीपैस्तु नैवेद्यैः फलपुष्पैरनेकशः गीतवाद्यैस्तोत्रपाठैर्वेदपारायणैस्तथा उत्सवस्तत्र कर्तव्यो नानावादित्रसंयुतैः कन्यकानां पूजनञ्च विधेयं विधिपूर्वकं चन्दनैर्भूषणैर्वस्त्रैर्भक्ष्यैश्च विविधैस्तथा सुगन्धतैलमाल्यैश्च मनसो रुचिकारकैः एवं सम्पूजनं कृत्वा होमं मन्त्रविधानतः अष्टम वा नवम्यां वा कारयेद्विधिपूर्वकं ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् पारणं दशमी दिने कर्तव्यं शक्तितो दानं देयं भक्तिपरैर्नृपैः एवं या कुरुते भक्त्या नवरात्रव्रतं नरा नारी वा सद्वा भक्त्या विधवा वा पतिव्रता इहलोके सुखं भोगान् प्राप्नोति मनसेप्सितान् देहान्ते परमं स्थानं प्राप्नोति वृत्तत्परः जन्मान्तरेऽम्बिका भक्तिर्भवत्यव्यभिचारिणी जन्मोत्तमकुले प्राप्य सदाचारो भवेद्धि सः नवरात्रव्रतं प्रोक्तं व्रतानामुत्तमं व्रतम् आराधनं शिवायास्तु सर्वसौख्यकरं परम् अनेन विधिना राजन् समाराधय चण्डिकां जित्वा रिपूनस्खलितं राज्यं प्राप्स्यनुत्तमं सुखं च परमं भूप देहेऽस्मिन् स्वगृहे पुनः पुत्रदारान् समासाद्य लप्स्यसे नात्र संशयः वैश्योत्तमत्वमेवाद्य समाराधय कामदां देवीं विश्वेश्वरीं मायां सृष्टिसंहारकारिणीं स्वजनानां च मान्यस्त्वं भविष्यसि गृहे गतः सुखं सांसारिकं प्राप्य यथा विलसितं पुनः देवी लोकेषु वेवासु भविता तेन संशयः नाराधिता भगवती यैस्ते नरकभागिनः यलोकेति दुःखार्ता नानारोगैः प्रपीडिता भवन्ति मानवा राजन् शत्रुभिश्च पराजिता निष्कलत्राय पुत्राश्च तृष्णार्ताः स्तब्धबुद्धयः बिल्वीदलैकरवीरैः शतपत्रैश्च चम्पकैः अर्चिता जगतां धात्री यैस्तेतीव विलासिनः भवन्ति कृतपुण्यास्ते शक्तिभक्तिपरायणाः धनविभवसुखाढ्या मानवा मानवन्तः सकलगुणगणानां भाजनं भारती सा निगमपठितमन्त्रैः पूजितायैर्भवानी नृपतितिलकमुख्यास्ते भवन्ति ह्यलोके। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां पंचमस्कन्धे भगवत्या पूजाराधन विधिवर्णनं नाम चतुस्त्रिंशः। अथ पंचत्रिंशोऽध्यायः। सुरत और समाधि की तपस्या से प्रसन्न भगवती का प्रकट होना और उन्हें इच्छित वरदान देना। व्यास उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा दुःखितौ वैश्य पार्थिवौ प्रणिपत्य मुनिं प्रीत्या प्रश्रयावनतौ भृशं हर्षेणोत्फुल्लनयना वूचतुर्वाक्यकोविदौ कृताञ्जलिपुटौ शान्तौ भक्तिप्रवणचेतसौ भगवन्पावितावद्य शान्तौ दीनौ सुचान्वितौ तव सूक्त सरस्वत्या गङ्गयैव भगीरथा साधवा सम्भवन्ति यः
उपकृति तत्परा अकृति अकृत्रिमगुणारामा सुखदा सर्वदेहिनां पूर्वपुण्यप्रसंगेन प्राप्तोऽयमाश्रमा शुभा तवावाभ्यां महाभाग महादुःखविनाशकः भवन्ति मानवा भूमौ बहवः स्वार्थतत्परा परार्थसाधने दक्षा केचित् क्वापि भवादृशा दुःखितोऽहं मुनिश्रेष्ठ वैश्योऽयं चाति दुःखितः उभौ संसारसन्तप्तौ तवाश्रम पदे मुदा दर्शनादेव हेद्विद्वन् गतं दुःखमिहावयो देहजं मानसं वाक्य श्रवणादेव साम्प्रतं धन्या वावां कृतकृत्यौ जातौ सूक्तिसुधारसात् पावितौ भवता ब्रह्मन् कृपया करुणार्णव गृहाणास्मत्करौ साधो नयपारं भवार्णवे मग्नौ श्रान्ताविति ज्ञात्वा मन्त्रदानेन साम्प्रतं तपा कृत्वा ते विपुलं समाराध्य सुखप्रदां सम्प्राप्य दर्शनं भूयो यास्यावो निजमन्दिरं वदनात् सम्प्राप्य देवी मंत्रं न वाक्चरं स्मरणं च करिष्यावो निराहारौ धृतभृतौ व्यासुवाच इति संचोदितस्ताभ्यां सुमेधामुनिषत्तमा ददौ मंत्रं शुभं ध्यानबीजपुरासरं तौ च प्राप्य मुनिर्मन्त्रं सम्मन्त्र्य गुरुदैवतौ जग्मतुर्वैश्य राजानौ नदीतीरमनुत्तमम् एकान्ते विजने स्थाने कृत्वासनपरिग्रहम् उपविष्टौ स्थिरप्रज्ञौ तावतीव कृशोदरौ मन्त्रजापिरतौ शान्तौ चरित्रत्रयपाठकौ नियन्तुर्मासमेकं तु तत्र ध्यानपरायणौ तयोर्मासभृतेनैव जाता प्रीतिरनुत्तमा पादाम्बुजे भवान्यास्तु स्थिरा बुद्धिस्तथाप्यलं कदाचित् पादयोर्गत्वा मुनिस्तस्य महात्मनः कृतप्रणामा वागत्य तस्थस्तुश्च कुशासने नान्यकार्यपरौ क्वापि बभूवतु कदाचन देवी ध्यानपरौ नित्यं जपमन्त्ररतौ सदा एवं जाते तदा पुणे तत्र संवत्सरे नृप बभूवतु फलाहारं त्यक्ता पर्णासनौ नृप वर्षमेकं तपस्तत्र चक्रतुर्वैश्यपार्थिवौ शुष्कपर्णासनौ दान्तौ जपध्यानपरायणौ पूर्णे वर्षद्वये जाते कदाचित् दर्शनं च तौ प्रापतु स्वप्नमध्ये तु भगवत्या मनोहरं रक्ताम्बरधरां देवीं चारुभूषणभूषितां कदाचिन्नृपते स्वप्नेऽप्यपश्यज्जगदम्बिकाम् वीक्ष्य स्वप्ने च तौ देवीं प्रीतियुक्तौ बभूवतुः जलाहारस्तृतीये तु स्थितौ संवत्सरे तु तौ एवं वर्षत्रयं कृत्वा ततस्तौ वैश्यपार्थिवौ चक्रतुस्तौ तदा चिन्तां चित्ते दर्शनलालसौ प्रत्यक्षं दर्शनं देव्या न प्राप्तं शान्तिदं नृणां देहत्यागं करिष्यावो दुःखितौ भृशमातुरौ इति संचिन्त्य मनसा राजा कुण्डं चकारः त्रिकोणं सुस्थिरं सौम्यं मस्तमात्रप्रमाणतः संस्थाप्य पावकं राजा तथा वैश्योति भक्तिमान् जुहावासौ निजम्मासं छित्त्वा पुनः पुनः तथा वैश्योऽपि दीप्तेघ्नौ श्वमांसं प्राक्षिपत्तदा रुधिरेण बलिं चास्यै ददतुस्तौ कृतोद्यमौ तदा भगवती दत्त्वा प्रत्यक्षं दर्शनं तयो प्राप्रीतिभरोद्भ्रान्तौ दृष्ट्वा तौ दुःखितौ भृशं देव्युवाच वरं वरय भो राजन् यत्ते मनसि वाञ्छितं तुष्टाहं तपसा तेद्य वक्तोऽसि त्वं मतो मम वैश्यं प्रातदा देवी प्रसन्नाहं महामते किं ते भीष्टं ददाम्यद्य प्रार्थयासु मनोगतं व्यास उवाच तच्छ्रुत्वा वचनं राजा तामुवाच मुदान्विता देहि मेद्य निजं राज्यं मत्शत्रुबलं बलात् तमुवाच तदा देवी गच्छ राजन् निजं गृहं सत्रवाचेण सत्त्वास्ते गमिष्यन्ति पराजिता मन्त्रिणस्ते समागम्य ते पतिष्यन्ति पादयो कुरु राज्यं महाभाग नगरे यथा सुखं कृत्वा राज्यं सुविपुलं वर्षाणामयुक्तं नृप देहान्ते जन्म सम्प्राप्य सूर्याच्च भविता मनोः व्यास उवाच वैश्यस्तामप्युवाचेदं कृताञ्जलिपुटा शुचिः न मे गृहेण कार्यं वै न पुत्रेण धनेन वा सर्वं बन्धकरं माता स्वप्नवन्नस्वरं स्फुटं ज्ञानं मे देहि विष्टं मोक्षदं बन्धनाशनम् असारेऽस्मिंश्च संसारे मूढा मज्जन्ति पामरा पंडिता संतरन्ति यः तस्मान् नेक्षन्ति संस्कृतिं व्यास उवाच तदा कर्णमहामाया वैश्यं प्रास्पुरस्थितं वैश्यवर्य तव ज्ञानं भविष्यति न संशयः इति दत्त्वा वरं ताभ्यां तत्रैवान्तर्धीयत अदर्शनं गतायां तु राजा तं मुनिसत्तमं प्रणम्य हयमारुह्य गगनाय मनो दधे तदैव तस्य सचिवास्तत्रागत्य नृपं प्रजा प्रणेमुर्विनयोपेतास्तमूचु प्राञ्जलिस्थिता
राजंस्ते शत्रवा सर्वे पापाञ्च नेतारणे राज्यं निष्कण्टकं भूप कुरुष्व पुरमास्थितः। तच्छ्रुत्वा वचनं राजा नत्वा तं मुनिसत्तमम् आप्रच्छ निरयौ तत्र मन्त्रिभिः परिवारितः। सम्प्राप्य च निजं राज्यं दारान् स्वजनबान्धवान् भुजे पृथिवीं सर्वां तथा सागरमेखलां वैश्योऽपि ज्ञानमासाद्य मुक्तसङ्गासमन्ततः। कालातिवाहनं तत्र मुक्तबन्धश्चकारः तीर्थेषु विचरन् गायन् भगवत्या गुणानथ। एतत्ते कथं देव्याश्चरितं परमाद्भुतम् आराधनफलप्राप्तिर्यथावद् भूपवैश्ययो दैत्यानामन्नं प्रोक्तं प्रादुर्भावस्तथा शुभा एवं प्रभावा सा देवी भक्तानां भयप्रदा। यः शृणोति नरो नित्यम् एतद् आख्यानम् उत्तमं सम्प्राप्नोति नरः सत्यं संसारः सुखमद्भुतं ज्ञानदं मोक्षदं चैव कीर्तिदं सुखदं तथा पावनं श्रवणान्नूनम् एतदाख्यानमद्भुतम् अखिलार्थप्रदं नृणां सर्वधर्मसमावृतं धर्मार्थकां मोक्षाणां कारणं परमं मतं। सूत उवाच जनमेजयेन राज्ञासौ पृष्टा सत्यवती सुता उवाच संहितां दिव्यां व्यासा सर्वार्थतत्त्ववित् चरितं चण्डिकायास्तु शुम्भदैत्यवधाश्रितं कथयामास भगवान् कृष्णाकारुणिको मुनिः इति वा कथितं सारा पुराणानां मुनीश्वरः। जय जय श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितां पंचमस्कन्धे सुरथराज समाधिवैश्वयोर्देवी भक्तेष्टप्राप्तिवर्णनं नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः पंचमः स्कन्धः सम्पूर्णः। श्रीदेव्या जगदम्बार्पणम् अस्तु। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नित्य देवी भागवत का श्रवण करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और भक्तों से शेयर करें। जय श्री कृष्ण।